Hi, hello students. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss material chemistry chapter. Okay. So from the material chemistry in the today's session I am going to be discuss on nanochemistry chapter. So these are the some of the outline of the course. Means in this session the part which I am going to be cover that will be introduction, types, classification and the synthesis. Okay, so before begin with this session, first we should understand why this chapter we have to study. What is the important? Now today everybody is talking about what nanomaterials. Even though your advertisement for the consumer product, they are going to be use the prefix word nano as a main keyword, as a main special feature. So indeed many publications, books, journals are developed to this topic. Why? Because there will be the most important point that we have to study throughout the nano object will be these materials are going to be very faster. They can get very easily insert into the small spaces. They are actually very cheaper, more energy efficient and the different properties at very small scale. So these are the some of the main reason that why we have to learn the nanochemistry chapter. Okay. Now after understanding the brief part of the nanochemistry part, now we move towards the introduction part. So what is the introduction? So introduction is nothing but what we are going to be learn the nanomaterials. Now here nano means what? The nothing but the 1 nanometer is equivalent to what? Your 10 raised to minus 9 meter. Now these things are going to be known to everyone. Now 1 nanometer is nothing but what? Your 1 billionth of meter. And the another definition for the nanomaterial will be it is any material having at least one of its dimension in the range of 1 to 100 nanometer. So we can say for example, suppose you have the 100 crore rupees. मतलब आपके पास 100 crore rupees है. So उसमें से if I am going to be consider the 1 rupee means your 1 nanomaterial. So these are the actually meaning of your nanomaterials. So basically this term nanomaterial will be first time introduced by the Norio Taniguchi in 1974. Okay, so also these words, nanos words are coming from the Greek word means dwarf. Dwarf का मतलब होता है it's actually very small means miniature scale. So for example in the nanomaterial we can consider the metal rubbers, carbon nanotubes, nanoparticles, quantum dots and the etc. ठीक है. So these are the actually main reason that why we have to learn the nanomaterials. So further we move towards the types of the nanomaterial. Now the types of the nanomaterial basically they are actually two types. First one will be they are the naturally occurring, whereas the second one will be the man-made. Now naturally occurring nanomaterial means you can say the forest fires, then virus, apart from that sea spray, and the fourth one will be the volcanoes. Okay, so these are the actually part of your what naturally occurring material. Then man-made again further classified into the two types. One will be the incidental and another one will be the engineering. Man-made का मतलब यहाँ पर है that we are going to be synthesize the nanomaterials by artificially. So incidental का मतलब by incident they are going to be generating like your cooking smoke, industrial effluents, diesel exhaust and the welding fumes. Whereas the engineering nanomaterial means these are the what you are quantum dots, carbon nanotube, bucky balls, okay, and the metal oxides. MO का मतलब है metal oxide, QD quantum dots, CNT carbon nanotube and the bucky ball. So these are the actually some of the types of the nanomaterial which we are going to be study in the throughout the chapter. Okay, but apart from that, okay, there will be the another types of the nanomaterial also we are going to be study in the nanochemistry, that will be carbon based nanomaterial. So nowadays everyone is going to be more focused on the carbon based nanomaterial, then ceramic nanomaterials, metal oxide nanomaterial, again it is also very interesting part, semiconductor nanomaterial, polymeric nanomaterials and the lipid based nanomaterial. So apart from the naturally occurring and the man-made, these are the some of the types of the nanomaterial which are going to be more fascinated area towards the research and development. Okay. So now after understanding the all the kinds of and all the types of the nanomaterial, we further look into the what are the classification of nanomaterial. Now these classification actually based on the your dimension. Now what is the dimension? Dimension with respect to your x, y and the z axis. So depending on the x, y, z plane, they are going to be classified into mainly 4 types. The first 0 dimensional, second 1 dimensional, third 2 dimensional and fourth one will be the 3 dimensional. Okay, so as you are going to be look into here in the 0 dimensional, I am going to be draw the diagram.
the x, y and z plane. So if you can see in the x, y, z axis, all the axis means all the plane are going to be confined to the nanomaterial scale. So we can say it's a zero dimensional. So in which the movement of the electron is going to be confined in all the three dimension. तो उसे यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जीरो डायमेंशनल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स एक्सेट्रा. सो लुक इनटू हियर, दीज आर द एक्चुअली नैनो पार्टिकल्स डायग्राम. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट will be the your one dimensional. Now one dimensional means what is the meaning of the one dimensional? Over here, as you can see in the diagram, the x, y, z plane, in this out of the three plane only the two plane in the nanometer scale, whereas the one of the scale means one of the plane has to be in the larger amount, in the large scale. तो यहाँ पे जो z axis है उसे हम लोग यहाँ पे large रखते हैं, whereas the x and y will be confined to the nanometer scale. तो उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं one dimensional. So the one dimensional in which the electrons can only move freely into the any one direction. तो यहाँ पे वो move freely कर सकता है onto the z direction. तो उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट one dimensional. For example, carbon nanotubes, nanorods or the nanowires etc. So these are the actually what your example or the 2D. Then 1D. Now we are going to be moved towards the two dimensional. So in the two dimensional, in which the free electron can move into the any two plane, means into the x and the y plane. So if you can see, the x and y plane will be the free for two electron move here and there, whereas the one of the प्लेन में हैज टू बी कन्फाइंड टू द नैनोमीटर स्केल. तो यहाँ पे जेड एक्सिस को हम लोग नैनोमीटर स्केल रखते हैं, वेयर एज एक्स एंड वाई विल बी द लार्जर इन स्केल. तो इसे हम लोग एग्जांपल में कंसीडर करते हैं. इसमें नैनो शीट, नैनो फिल्म एंड द नैनो कोटिंग. सो हियर यू कैन सी दीज आर द नैनो शीट और नैनो कोटिंग वी कैन सी. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थ्री डायमेंशनल एग्जाम्पल है नैनो फ्लावर्स, बकीबॉल्स वगैरह. तो यहाँ पर क्या होता है, इन टू द थ्री डायमेंशनल nanostructure material built a nanoparticle as a building block in which the free electron can move in any direction of the x, y, z plane. तो यहाँ पे ये सारे planes free होते हैं, they are not confined to the nanometer scale. तो ये exactly opposite होता है zero dimensional के. Whereas x, y, z plane in the zero dimensional they are confined toward the nanometer scale, where they doesn't confine to the nanometer scale. तो एक्जैक्टली अपोजिट होता है, उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टूडेंट थ्री डायमेंशनल व्हाट नैनो मटेरियल. सो एज यू कैन सी दीज आर द ब्लॉक डायग्राम फॉर द your nanomaterial, or you can say as an example nano flowers. Okay, now after understanding all the classification in based on the your dimension, we move towards the our next part of your outline of the course, that how we are going to be synthesize the nano material. So these are the actually basically most important part of your nano chemistry. So we can say hard, because end of the day what we are going to be interested in, that how we are going to be synthesize it. So basically when you are going to be synthesize the nano material, there are basically mainly two approach they are going to be follow. तो वो दो अप्रोच है आपके यहाँ पे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज ओके नैनो मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन देयर मैकेनिज्म एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोसेस. दे आर ओनली क्लासिफाइड इनटू मेनली थ्री पार्ट. So in that your first part will be physical method, second chemical method, and third one will be the biological method. So physical method will be the part of top down process, and the chemical method, it is a part of bottom up process. Okay, now what is happening here over here, just take a look. Now physical method is nothing but what, you should follow some of the mechanical iteration in this process, and then that has to be by follow that particular process you are going to be making the nano material. Now again in the physical you could see over here they are follow the two process. One will be the mechanical and where is the second one will be the vapor. In the mechanical we are going to be learn in this session high energy ball milling method, and in the vapor we are going to be study the laser ablation method. Further in the chemical we are going to be study over here the mainly two method. The first method will be over here student, that will be the CVD. CVD का मतलब यहाँ पे होता है student chemical vapor deposition method, and the second one will be your sol gel method. So apart from this bottom up process means CVD and the sol gel method, there will be the another method also we are going to be consider in chemical, that is a hydrothermal method, co-precipitation method, solvothermal method,
inothermal method, but we are not going to be study. There are various kinds of the processes in the chemical method, but we are going to be studying in this session only the two method, that will be the CVD and the Sol-Gel method. And third one will be the biological method. Now biological method, instead of we are not going to use any physical and the chemical process, we directly take over here biological ingredient, and that biological ingredient has to be reacted with the nanoparticles, means your metal salt and metal oxides, and they are going to be converted into the finely nano powder. Okay, so these are the mainly three main processes that how we are going to be synthesize the nanomaterials. Okay, so we look into the first, हम लोग physical method से start करते हैं. So take a look. So physical method actually basically the top down approach. टॉप डाउन अप्रोच का यहाँ पर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दैट वी आर गोइंग टू बी कंसिडर ओवर हियर द लार्जर मॉलिक्यूल. Okay, so that larger molecule has to be breaking down, okay, and we will get over here the smaller molecule, which is the nanostructure. So the process of making what nanostructures starting with larger structures, okay, and breaking away to the nano size is called basically what your top down approach. Okay, so in the top down approach, for example, we can say the ball milling, epitaxy, lithography. These are the some of the example of your what top down process. But in this we are going to be study what your high energy ball milling. Now just take a look. अब high energy ball milling का आपको यहाँ पे basically there are the three kinds of the processes. So it is actually one of the simplest ways to making the nanoparticle of some metals, or we can say the alloys, in the form of powder. So there are many types of the mills. Okay, so as you can see in the diagram, so these are the all the types of the mills, like your planetary mill, okay, these are the vibratory mill, and these are the tumbler ball mill. Okay, so in the all the process, okay, the main principle of this process will be the grinding of your sample material with the help of the what your metal balls or stainless steel ball we are going to be used, and we are going to be making the finely coarse powder जो हमें यहाँ पे बनाना होता है. So these are the actually main purpose of this technique. So as you can see here in the what, when the containers are going to be rotating, तो यहाँ पे basically क्या होता है, such type of the containers will be there. For example, मान लीजिए these are the actually containers. So in that container what we are going to do, we are going to take the stainless steel or the metal body rigid mass जिसका होता है वो हम लोग ऐसे balls उसमें डालते हैं. Suppose these are the your metal balls. Now in that we are going to be putting our sample which we have to create the nanomaterial, जिसका हमें यहाँ पे nano particle में conversion करना है या फिर nanomaterial जिसे हमें बनाना है, वो sample हम लोग इसमें डालते हैं. Then with the help of the high energy, these what mill means this ball mill will be start to rotate. तो ये ऐसे rotation start होगा. Just take a look. So this is how they are going to be rotating with the high energy. So after the rotation will be taking place, as you can see over here, the collision will be taking place. तो यहाँ पे collision किसका हो रहा है ना, तो collision will be taking place among the, so यहाँ पे सिर्फ एक metal ball नहीं रहता, there are several metal balls, rigid masses will be present. So they are going to be start to rotating, and when they are going to be start to rotating, they are collide with itself and collide with the console of the container. तो wall जो है container के उसके साथ भी उनका collision होता है, and during that what will happen, the in between the two metal balls, the sample जो है that will be start to grind, and then they are going to be making the finely powder with the high energy. So these are the actually main process of your what high energy ball milling, that how they are going to be converted into the your sample into the nanomaterial. So as you can see in the all the three or different kinds of the ball milling, you can see these are the vibratory mill. तो यहाँ पे क्या होता है, the vibration will be taking place, and during the vibration these are the actually circle जो मैंने बनाया है ऑरेंज कलर पेन से, वो है आपका ग्राइंडिंग मीडियम, तो वो होता है स्टेनलेस स्टील या फिर कोई मेटल बॉडी होगी. एंड दीज आर द डॉटेड विच आई एम गोइंग टू शो द पर्पल कलर, दैट इज योर मटेरियल टू ग्राइंड, जिसे हमें नैनो मटेरियल बनाना है. देन स्टार्ट टू वाइब्रेट लाइक up down, and then they are going to be creating the what your nanoparticles. This is the tumbler ball mill. So in the tumbler ball mill they are going to be rotate how like this. So these are the actually arrow showing you the direction. तो वो ऐसे rotate होगा. So जैसे ही वो rotate होगा, suppose these are the going to be, तो ये seal होता है, ओके, और यहाँ पे कुछ ये होता है कनेक्शन होता है, and they are start to rotate like this. तो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या होगा उसका स्टूडेंट, ये होगा, take a look, ये ऐसे vertically they are start to rotate. तो ये हुआ tumbler ball mill, and they are going to be creating the finely fine powder. And these are the planetary ball mill. The planetary ball mill ये ऐसे rotate होगा vessels, whereas the container will be rotated in the opposite direction, and how they are going to be motion into the circular. ठीक है, so this is how we are going to be generating by using the high energy ball milling your nanomaterial. So these are the actually major role of this technique will be the mechanical attrition taking place over here. Okay,
Now after understand the high energy ball milling, the second one will be the laser ablation method. Now these are the again vapor method. Now what will be word? Obviously here already मैंने mention किया है laser. तो laser का यहाँ पे मतलब है there will be the sum of the light has to be exposure with your what lights मतलब sample के साथ. तो यहाँ पे properly देख लीजिए. Recently researchers have developed this laser ablation technique to synthesize nanoparticles of control particle sizes and the composition. So the technique involves what vaporization of your target using pulse laser. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, basically we are going to be vaporize the target material by using the pulse laser, and then followed by in the control manner we are going to be condense that material, and then finally we in the chamber or we can say in the container we will get our interested nano material. So in this method the vaporization of material are going to be effected by the pulse of the laser beam with the high power. So as you can see, these are the actually laser light, these are the actually focusing length. So through this focusing length, this laser are going to be falls onto the your target material. So as you can see in the complete diagram, these are the actually your stand. Here will be the mechanic stirrer connection will be there. These are the container. In that container you are going to be take the distilled water or the nanoparticles or the metal salt, you can say. These are the target holder. On that target holder we are going to place our टारगेट. टारगेट का मतलब यहाँ पर सैंपल जिससे हमें नैनो मटेरियल बनाना है. सो विच एवर यू आर इंटरेस्टेड टू मेकिंग द नैनो पार्टिकल, वो आपका टारगेट होगा. यहाँ पे आपका होता है इलेक्ट्रो स्प्रे. Okay, these connected with the high voltage, and then these are the outlet. Now these are the actually coming out the your nanoparticles which are going to be coming outside, and with the help of the mass analyzer we are going to be record the what your nanomaterials. तो उसका हमें यहाँ पे डेटा मिलता है. So basically what this laser as soon as going to be falls into the your target material, they are going to be what decompose, वो वहाँ पे spread हो जाएंगे, and they strike to the then electrons are going to be coming out. और यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो 3 different colors I am going to be using. तो जो ब्लू कलर का यहाँ पर है that is your electrospread droplet. They are going to be keeping away the nanoparticles. In the green color laser ablated sample droplet. Now यहाँ पे ablet का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए ablated, laser ablated sample droplet का मतलब यहाँ पर ये होता है, ablet का मतलब होता है remove. What remove? So यहाँ पे जो target material होता है as soon as they are going to be interacted with the laser, तो यहाँ पे क्या होता है immediately the removal of the nanoparticles will be taking place from the sample surface and they are going to be generated as a droplet. तो वो यहाँ से क्या होते हैं nanoparticles में उनका conversion होता है after interaction with the laser light. And the pink color का जो मैंने शो किया वो है आपके ionized sample. So this is how after the interaction of the laser the sample has to be vaporized and generating the nanoparticle that we are going to be connected with the mass analyzer, and then finally we are going to be detected to it. So these are the basically what your laser ablation method. I hope so you should understand it, that how we are going to be synthesize the nanomaterial. Okay, now after understanding both the method, physical laser ablation, and second one will be the high ball milling method, third method will be your chemical method. Now chemical method again it is about your part of the bottom up process. Now bottom up process is exactly opposite to of your what top bottom process. अब bottom up process में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, we are going to consider the smaller molecule over here, okay, and from that smaller molecule we are going to be combinedly form the larger molecule. तो उसे यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं bottom up what process. So in the bottom up process, okay, the building of nanostructure starting with the small components such as atom or the molecules, okay, which is called as what your bottom up. So in this method the raw material sources can be in the form of gas, liquid or the solid, and then later require the some of the sort of the disassembly prior to the incorporation into the nanostructure. ठीक है, तो अब यहाँ पे इन द केमिकल मेथड जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे टेक्निक, वो है यहाँ पर सबसे फर्स्ट CVD. CVD का मतलब होता है यहाँ पर स्टूडेंट केमिकल वेपराइजेशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड. अब केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए प्रॉपरली. सो व्हाट इज द मीनिंग ओवर हियर? So it is the actually formation of non-volatile solid film on a substrate by the reaction of vapor phase chemicals that contain the required contents. तो in short आप यहाँ पर समझ लीजिए, it is the actually method of the synthesis. Initially we are going to be introduce the vaporized precursor, मतलब जो हमारे vaporized जो gaseous material होते हैं that we are going to be introduced into the CVD chamber in the reactor, and then these can be adsorbed onto the your substances held at the elevated temperature. Now these adsorbed molecules are either
thermally decompose or react with the other gases and then that vapors to form crystal. So यहाँ पे हम लोग step by step कुछ procedure follow करते हैं. So just take a look in the further diagram. I'm just going to be showing over here. So look over here in the diagram, as you can see these are the main gas flow. तो पहले तो मैं आपको diagram बता दूं what is the actually systematic diagram of the chemical vapor deposition. तो यहाँ पे आपके कुछ carrier gas and hydrocarbons के मतलब inner gases के कुछ inlet होते हैं. These are the flow meter to maintain the what your gaseous flow. Then these are the inlets. So throughout this here carbon based जो हमारे होते हैं, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन बेस्ड जो मटेरियल है, they are going to be transferred from the inlet over here. So these are the actually high temperature furnace होते हैं. तो ये furnace body. In the furnace body, in the middle part of the furnace, here will be the boat. ओके तो यहाँ पे कुछ फ्लैट सरफेस की प्लेट होती. इन दैट प्लेस वी आर गोइंग टू बी पुटिंग अवर सैंपल. फ्रॉम दैट वी हैव टू जनरेटेड द नैनो मटेरियल. तो यहाँ पे आपका सैंपल होगा. दीज आर द एक्चुअली कॉर्ड ट्यूब विच इज कनेक्टेड इन द हाई टेम्परेचर फर्नेस एंड दीज आर द आउटलेट. तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं T1, T2, T3. तो प्रोसेस क्या होता है, एज सुन एज दिस मेन गैस फ्लो विल बी स्टार्टेड, immediately the gases जो होते हैं present in the phase reaction, that gases phase reaction will be interact. तो यहाँ पे reaction होगा. After the carried out the chemical reaction, they are going to be settling down onto the surface, okay, which is your target material. तो यहाँ पे पहला step होता है adsorption of the film of the precursor. देन यहाँ पे होता है बाद में दे आर गोइंग टू बी अगेन दिस केमिकल रिएक्शन विल बी कंटिन्यूसली स्टार्टेड इनटू द चेम्बर. देन फर्दर सरफेस डिफ्यूजन विल बी टेकिंग प्लेस. सो सरफेस डिफ्यूजन के बाद यहाँ पे होता है डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रीकर्सर. तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टार्ट होगा. देन वन बाय वन एज यू कैन सी ओवर हियर 1, 2, 3, 4, 5. सो वन बाय वन दिस केमिकल प्रोसेस विल बी कंटिन्यूसली स्टार्ट एंड द वन थिन फिल्म विल बी हियर जनरेटेड ऑन टू द सबस्ट्रेट surface. तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएशन एंड दी स्टेप ग्रोथ एंड देन दिस फिल्म विल बी जनरेटेड एंड फाइनली एंड ऑफ द डे द डिसऑर्प्शन ऑफ द वोलेटाइल जो बाय प्रोडक्ट है, बिकॉज मैंने पहले ही डेफिनेशन में बोला था जो नॉन वोलेटाइल जो मटेरियल होते हैं दैट हैज टू बी व्हाट हियर कोटिंग होता है उनका, और जो वोलेटाइल जो हमारे बाय प्रोडक्ट हो गए उनका यहाँ पे क्या होगा, डिसऑर्प्शन होगा. तो दिस इज बेसिकली व्हाट सॉलिड मटेरियल हैज टू बी कोटेड ऑन टू द योर सरफेस, सबस्ट्रेट सरफेस. तो उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन. तो दीज आर द एक्चुअली व्हाट योर होल डायग्राम. सो दिस इज द सीवीडी प्रोसेस विल बी द मोर इम्पोर्टेंट इन पॉइंट ऑफ योर फॉर्मेशन ऑफ द कोटिंग. तो यहाँ पे मेजर जो 3 प्रोसेस जो होते हैं फिर से मैं बता रही हूँ. सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पर रिएक्टेंट विल मूव ऑन टू द ग्रोथ सरफेस वाया बाउंड्री लेयर डिफ्यूजन. सेकेंड जो होता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द ग्रोथ सरफेस. ओके एंड द थर्ड विल बी द रिमूवल ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ग्रोथ सरफेस. तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रोथ होगा सरफेस के ऊपर बाय द डिफ्यूजन. सेकेंड ग्रोथ सरफेस का केमिकल रिएक्शन होगा एंड फाइनली आफ्टर द रिएक्शन जो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा वोलेटाइल मटेरियल होगा उसका क्या होगा यहाँ पे रिमूवल होगा. सो दीज आर द एक्चुअली कंप्लीट डायग्राम ऑफ योर व्हाट CVD. सो यू कैन सी दीज आर द चेम्बर. और जनरली यहाँ पे जो ओवन टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर मतलब 500 to 720 डिग्री सेल्सियस का हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. यहाँ पे बीच में होता है आपका क्वार्ट्ज ट्यूब एंड इन दैट ट्यूब विल बी देयर विल बी द बोट, मतलब एक प्लेट होती है फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर आपका होता है सैंपल मटेरियल, उसके ऊपर ही आपके नैनो मटेरियल से यहाँ पे क्या होते हैं ऑब्जर्व होते हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल मेथड जो है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द CVD सोल-जेल मेथड. अब सोल-जेल मेथड का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, एज यू कैन सी ओवर हियर द वर्ड इज सेल्फ टॉकिंग अबाउट द योर मेथड. अब सोल तो सबको पता होगा. सोल इट इज एक्चुअली व्हाट योर वन टाइप ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म होता है जिसे हम लोग सोल बोलते हैं. और जेल का मतलब क्या है, जब कोलाइडल सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और द सेमी सॉलिड फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है तो उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जेल. आई होप सो इतना आपको पता होगा. तो सोल इट इज अ व्हाट कोलाइडल सॉल्यूशन where the gel will be the solid and the semi solid liquid of the your colloidal solution, so we can say it's a gel. तो first of all in the sol gel method जो है term जो है the first time coined in the late 18 and it is actually low temperature method. ये actually हम लोग carried out करते हैं low temperature method पे. So sometime it is also called as what wet chemical टेक्निक भी इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं स्टूडेंट बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या होता है, हम लोग प्रीकर्सर लेते हैं जो हमें सॉल्यूशन यहाँ पे बनाना है. तो आपका यहाँ पे मेटल सॉल्ट होगा, नैनो पार्टिकल होगा, विच एवर मीन्स जो आपको नैनो मटेरियल यहाँ पे बनाना है उसका सॉल्यूशन होगा. देन फॉलोड दैट यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ पे पहले तो स्टरिंग विल बी टेकिंग प्लेस बाय फॉलोड द हाइड्रोलिसिस एंड द कंडेंसेशन. यहाँ पे सोल
क्रिएट होगा, तो सोल्ट फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट बीकर एंड द सेकंड बीकर यू विल गेट द डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख लो ग्रीन कलर्स के मैंने डॉट दिखाए, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ ना, सोल्ट सोल्यूशन बना। सो दीज आर योर clear solution. So by followed the hydrolysis and the condensation, now salt formation will be taking place. Now after this colloidal solution, gelation process will be start. तो यहाँ पर हम लोग gelation start करने के बाद you will get here इंटीग्रेटेड नेटवर्क। नाउ दिस ऑल द ग्लोबुल्स जो है यहाँ पर बबल जो दिखाई दे रहे डॉट्स, दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड नेटवर्क। तो यहाँ पे जेल फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, ओके, after the your salt formation, and once the salt and gel both the solutions are going to be formed, this gel, now this gel will be what your semi solid solution, not completely solid, means some of the part of the your solid and little part of the liquid will be present, okay. Now this gel has to be drying, तो ड्राइंग प्रोसेस यहाँ पे हम लोग 2 वेज से करते हैं। फर्स्ट होगा आपका इवेपोरेटिव ड्राइंग, मतलब ओवन में उस सैंपल को रखें हम लोग, उसमें से जो वाटर है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। और सेकंड जो होता है ड्राइंग वो होता है सुपर क्रिटिकल ड्राइंग। सो वंस वी आर गोइंग टू बी इफ ड्राइंग द जेल in the form of supercritical drying, we will get here aerogel, and if we are going to be drying the gel sample by the evaporated drying, so we will get here zero gel, and from finally the zero or aerogel we will get the here final product, means your nano powder, and that has to be further characterized and the purification will be taking place. So this is how we are going to be what synthesize the nanomaterial by using the salt gel method. तो यहाँ पे आप salt gel method जो है वेरी फेमस है मेटल ऑक्साइड्स के लिए, जिससे आप लाइक योर टिटेनियम ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, वो हम लोग वेरी वंडरफुली बाय यूजिंग द सॉल्ट जेल मेथड हम लोग इससे बना सकते हैं। जस्ट यू हैव टू यूज and you have to see the available chemicals you have or not, okay. Now after understanding the chemical method, the last part of this will be your biological method. Now biological method means what itself talking about what your biological ingredient. अब इसमें हम लोग 3 टाइप स्टडी करते हैं। एक तो बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग प्लांट या प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं फॉर द रिएक्शन, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग ईस्ट वगैरह ले सकते हैं। एंड द बायोमोलिक्यूल मीन्स वी टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स, enzymes, carbohydrates or the nucleic acid, etc. So what will happen, all these biological ingredient, okay, first of all we are going to be mixed with the metal salt, okay. तो यहाँ पर as you can see these are the dotted जो मैंने दिखाया green and the pink color, these are the what your biological substances along with the metal salt in the container. After putting into the container the reaction will be start. तो एज वॉट यूर अप्रोच फॉर द केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमें कौन सा नैनो मटेरियल बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर कैरिड आउट द फर्स्ट सोनिकेशन हम लोग कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक स्टर कर सकते हैं सोल्यूशन को, या फिर बाय फॉलो द कूलिंग एंड द हीटिंग टेक्निक. सो बाय फॉलो द सो मेनी प्रोसेसेस विद द बायोलॉजिकल सब्सटेंस एंड द मेटल सॉल्ट गेट कन्वर्टेड इनटू द नैनो पार्टिकल. बट यहाँ पे आपका प्रोसेस नहीं खत्म होता. आफ्टर वंस वी विल गेट हियर बाय फॉलोड द वन ऑफ द प्रोसेस वी विल गेट हियर नैनो पार्टिकल अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट. We remove the byproduct, we are interested into the nano particle. तो ऐसे आपको यहाँ पे सिंगल नैनो पार्टिकल मिलेंगे इन द कंटेनर. नाउ दिस नैनो पार्टिकल विल बी द न्यूक्लिएशन. तो यहाँ पे उनका स्टेप ग्रोथ स्टार्ट होगा. सो दे आर गोइंग टू बी स्टार्टेड टू कंबाइनली टुगेदर एंड मेकिंग द लार्जर मॉलिक्यूल. आफ्टर द ग्रोथ स्टेबलाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस. अब स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दे आर गोइंग टू बी सराउंडेड बाय द कैपिंग एजेंट सच एज द एंजाइम्स, functional group or the protein whichever present into your structure. So they are gives the coating and they are going to start to stabilize, and finally you will get over here cap and the stable nanoparticles. And after getting these stable nanoparticles we are going to be purified to it, and then further what characterized to it by follow the electron microscopy. ओके तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यू कैन सी द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. देन टीएम से हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम द विजिबल रेज यूवी विजिबल आयर वी कैन नॉट फाइंड दिस नैनो पार्टिकल्स कैरेक्टराइजेशन. तो पर्टिकुलरली टू कैरेक्टराइज द नैनो पार्टिकल वी हैव टू फॉलो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक. ओके सो आई होप सो स्टूडेंट इन द ऑल द part whatever I am going to be cover in this session, like your means introduction of the nanomaterials, then different types of the your nanomaterials, their classification based on the dimension, and finally the synthesis by physical, chemical and the biological method. Okay, I hope so you should clear your all the concept over here, but still if you have any doubt regarding this you should ask me the question. I definitely resolve you all the problems. So once again thank you so much student to watching this video. If you really like this video don't forget to subscribe us. Okay, so once again thanks a lot.